Hello students, in this video lecture we are going to study classification of polynomial on the basis of their degrees. Now in this classification the first definition is linear polynomial. So what is a linear polynomial? I am writing over here a polynomial of degree 1 is called linear polynomial. The general form of this linear polynomial is the general form of linear polynomial is px, this is equal to ax plus b. Px means what? A polynomial in variable x is equal to ax plus b. X over here is variable and a and b both are real numbers, where a and b are real numbers and a, there is one condition that this a cannot be equal to 0. We cannot replace this a by 0. We can replace this a by any real value except 0. This is the condition over here. Now for example, I am writing examples of linear polynomial. The first one is, the simplest one I am writing is, suppose 2x plus 1. Now see, first what is the degree of this x over here? 1. So this is a linear polynomial, first thing. Also a over here is 2 and b over here is 1. So this is an example of linear polynomial, a polynomial of degree 1. Now some more examples. Suppose if I write pu, this is equal to u. Now the question is this u a linear polynomial? Yes. Why? Because see, before this u, what is written over here? 1. And what is the power of u over here? 1. Power of u is 1. So first thing is this is linear polynomial. Also ये सारी conditions को क्या कर रहा है? Satisfy कर रहा है. देखो कैसे, u के पहले यहाँ पर 1 है और यहाँ पर अगर कुछ नहीं लिखा है, इसका मतलब यहाँ पर क्या लिखा है? 0. और देखो यहाँ पर b के लिए हमने क्या डिफाइन किया है? That b is a real number. तो b को हम 0 भी रख सकते हैं. तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ से हम ये कह सकते हैं that a linear polynomial can be a monomial, सिंगल टर्म का भी हो सकता है, and also it can be a binomial. ठीक है. So right now we have studied the definition of linear polynomial. Now the second definition over here is quadratic polynomial. Quadratic polynomial. Now the degree will increase. देखो, what is the degree over here? 1. So in quadratic what will be the degree? 2. So write a polynomial of degree 2 is called quadratic polynomial. Is called quadratic polynomial. Now the general form. The general form of quadratic polynomial is px, this is equal to, देखो what is the degree over here? 2. किस तरह से जनरल फॉर्म क्रिएट करते हैं ये देखो ध्यान से. देखो फर्स्ट आई एम राइटिंग a, with this a I'll multiply x and the power of x will be 2. अब हम क्या करेंगे, इसके बाद कंसेक्यूटिव अल्फ़ाबेट, a के बाद क्या आता है? अल्फ़ाबेट b, फिर b के बाद c, अल्फ़ाबेट्स लिखते जाएंगे और x के पावर को डिक्रीज़ करते जाएंगे. कब तक डिक्रीज़ करना? जब तक x का पावर 0 ना आ जाए. तो देखो ax स्क्वायर प्लस b इंटू एक्स पावर 1 प्लस c इंटू एक्स पावर 0, एंड एक्स पावर 0 इज़ वॉट? 1. तो एक्स पावर 0 हम यहाँ नहीं लिखते हैं. सो दिस इज़ द जनरल फॉर्म वेयर a, b and c are real numbers and
a cannot be equal to 0 and a cannot be equal to 0. Now why we always write a cannot be equal to 0? There is a reason why. Because देखो अगर तुमने गलती से भी a को 0 से रिप्लेस कर दिया तो ये जो पूरा टर्म है फर्स्ट टर्म ये 0 हो जाएगा. अगर यही टर्म 0 हो गया तो यहाँ पर डिग्री तो 2 रहेगा ही नहीं. अगर डिग्री 2 नहीं रहेगा देन दिस कैन नॉट बी अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल. सेम थिंग यहाँ पर भी था. देखो वाई हैव रिटन a कैन नॉट बी इक्वल टू 0 बिकॉज सी अगर सपोज बाय मिस्टेक इफ आई रिप्लेस दिस a बाय 0 तो ये दिस फर्स्ट टर्म विल बिकम 0 और यहाँ पर सिर्फ कांस्टेंट बचेगा, है ना. कांस्टेंट का पावर कितना होता है, कांस्टेंट का डिग्री कितना होता है, 0 होता है. तो ये पूरा डेफिनेशन ही गलत हो जाएगा. इसीलिए वी ऑलवेज मेंशन ओवर हियर दैट दिस a कैन नॉट बी इक्वल टू 0. ठीक है. अब चलो एग्जांपल्स देखते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के. फॉर एग्जांपल if I write suppose the first one is px this is equal to x square plus 2x plus 1. The first thing is देखो यहाँ पर what is the highest degree of x over here 2. So this means this is a quadratic polynomial. Correct. अब देखो यहाँ पर see the general form ax square plus bx plus c, ax square plus b into x plus c. So over here this is a quadratic polynomial और इसमें कितने टर्म्स हैं, 3 टर्म्स. दिस मीन्स ये ट्राइनोमियल है ये वाला एग्जांपल. नाउ सी वन मोर एग्जांपल. सपोज इफ आई राइट आर एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 2x. सो अगेन दिस इज अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्योंकि यहाँ सिर्फ हमें डिग्री चेक करना है. व्हाट इज डिग्री ऑफ एक्स ओवर हियर 2. तो ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल. और यहाँ पर जो थर्ड टर्म है वो क्या है तुम्हारा 0 है, इसलिए वो यहाँ नहीं दिख रहा है. सो इन दिस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इज अ बाइनोमियल. वाई? बिकॉज इट इज कंटेनिंग ओनली 2 टर्म्स. एक और एग्जांपल देखते हैं. क्यू एक्स इज इक्वल टू सपोज अगर बस इतना लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर. इज दिस अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल? येस. वाई? बिकॉज इट इज़ फॉलोइंग ऑल द कंडीशन. देखो एक्स स्क्वायर के पहले यहाँ 1 है और यहाँ पर कुछ नहीं लिखा है, मतलब ये कुछ ऐसा लिखा हुआ है 0 इंटू एक्स प्लस 0, इसलिए दिखाई नहीं देता है. आई बात समझ में? सो दिस इज ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल. So from here what we can conclude that a quadratic polynomial can be a monomial, it can be a binomial, also it can be a trinomial. So in this video lecture we have studied the definition of linear polynomial and quadratic polynomial. In the next video I will explain you the definition of cubic polynomial and biquadratic polynomial. Hope you have understood this lecture. Please note it down.